क्वेश्चन दिया हुआ है अ बैग कंटेन्स 5 white, 2 black and 3 red balls. 3 balls are drawn from the bag. The probability that all the 3 balls are white is. तो एक बैग में हमारे पास है 5 white, then 2 black and 3 red balls. अब इनमें से हमें 3 बॉल्स ड्रॉ करने हैं. तो टोटल बॉल्स अगर हम देखें तो 5 + 2 7 + 3 10. तो टोटल 10 बॉल्स में से हमें रैंडमली ड्रॉ करने हैं 3 बॉल्स. सो जो सैंपल स्पेस होगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज 3 बॉल्स आर ड्रॉन, therefore n of s will be equal to 10c3. ये 10 में से हम रैंडमली 3 पिकअप कर रहे हैं. ये सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो दिस विल बी 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1. So 3 ones are 3, 3s is 9, 2 ones are 2, 4s are 8. ये प्रोडक्ट आ जाता है 120. अब जो इवेंट दिया है वो देखें. The probability that all the 3 balls are white. तो सपोज इसे हम इवेंट A डिनोट कर देते हैं. A is the event of drawing 3 white balls. अब ये 3 white balls सिलेक्ट होंगे ये 5 में से. So therefore n of A will be equal to 5c3. इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. This will be 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1. So 3 gets cancelled. 2 ones are 2 2s are 4. Finally यहाँ आ जाता है 10. So therefore probability of event A will be n of A upon n of S. अब n of A है 10, n of S है 120. So we get the answer as 1 upon 12. And options check करते हैं. तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन B. A bag contains 20, 30 and 50 ₹1, ₹2 and ₹5 coins respectively. If 2 coins are drawn, the probability that they are one each of ₹2 and ₹5 coins is. तो यहाँ पर हमें एक बैग दी हुई है. इसमें 20, 30 and 50 ₹1, ₹2 and ₹5 coins है. तो 20 coins 1 rupee वाले हैं. Then 30 coins ₹2 वाले हैं and 50 coin ₹5 वाले हैं. अब यहाँ कहा गया है if 2 coins are drawn. अब अगर हम टोटल कॉइन्स देखें, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 20 + 30 50 + 50 100. सो एज 2 कॉइन्स आर ड्रॉन, तो जो सैंपल स्पेस होगा यहाँ पे दैट इज n of s विल बी 100c2. तो ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं ये आएगा 100 into 99 upon 2 into 1. तो ये आ जाता है 50 into 99. अब इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं. और इवेंट यहाँ पे जो दिया है वो है 2 coins are drawn, the probability that they are one each of ₹2 and ₹5 coin. मतलब हमें एक ₹2 और ₹5 का एक एक कॉइन हमें ड्रॉ करना है. सो इवेंट ए लेते हैं ऑफ ड्रॉइंग ₹2
and ₹5 coin each. तो जो n of a होगा, अब ₹2 वाले अगर हम देखें कितने कॉइन्स है 30 एंड ₹5 वाले 50. So n of a will be 30C1 and ₹5 वाले 50. So 50C1. So 30C1 होता है 30, 50C1 होता है 50. तो ये आ गया n of a. So therefore probability of event A will be n of a divided by n of s, यानी 30 into 50 upon 50 into 99. अब 50 हम कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को हम 3 से रिड्यूस करते हैं. 3 10s are 3 33s are. सो फाइनल आंसर आता है 10 upon 33. तो चॉइसेस देखते हैं, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी. When 3 coins are tossed, the probability of getting at least 2 heads is. तो यहाँ पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो 3 कॉइन्स का टॉसिंग है. सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो पहले इसका हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं. अब जब 3 कॉइन्स टॉस करते हैं, ईच टॉस में 2 आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल, एंड वी हैव 3 कॉइन्स. सो 2 raised to 3, मतलब टोटल आउटकम्स हमारे आ जाएंगे 8. तो 8 आउटकम्स लिखने के लिए पहले हम 4 हेड्स लिखते हैं, 1 2 3 4. फिर 4 टेल्स लिखते हैं, 1 2 3 4. अब 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, फिर से 2 हेड्स 2 टेल्स, और फिर 1 हेड 1 टेल. सो वी हैव H T H T H T H T. सो टोटल हो गए हमारे 8 आउटकम्स. और हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एटलीस्ट 2 हेड्स की, यानी 2 या उससे ज़्यादा हेड्स भी हो सकते हैं. तो सपोज इवेंट ए हम ले लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी 2 या उससे ज़्यादा हेड्स. तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो है एच एच एच, इसमें 3 हेड्स है. नेक्स्ट हम ले सकते हैं एच एच टी. सो वी हैव एच एच टी, देन एच टी एच, एच टी एच, इसमें तो 1 हेड है, इसमें 2 हेड्स है, देखिए. सो टी एच एच, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, और इसमें 1 भी नहीं है. तो ये सब आउटकम्स में 2 या उससे ज़्यादा हेड्स है, यानी n of a is equal to 4, और यहाँ पे n of s is equal to 8. So therefore हम कह सकते हैं probability of event A will be n of A upon n of s, यानी 4 out of 8. इसे अगर हम रिड्यूस करते हैं तो आंसर आएगा 1/2, which is option B. The probability of getting exactly 1 head in tossing a pair of coin is. Now when a pair of coin is tossed, तो हमारा जो sample space आता है वो है HH, HT, TH and TT, यानी n of s is equal to 4. हमें पूछा गया है probability of getting exactly 1 head. तो suppose event A हम लेते हैं of getting exactly 1 head. अब 1 head के फेवर में अगर हम देखें तो ये 2 आउटकम्स है, करेक्ट. यानी इवेंट ए में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है एच टी एंड टी एच. सो देयरफॉर n of a is equal to 2.
So therefore probability of event A will be 2 out of 4 and that is equal to half. तो अगर इसका आंसर देखें, so it's option D. The total number of events of throwing 10 coins simultaneously is. तो बेसिकली हमको सैम्पल स्पेस पूछा गया यहाँ पर n of s. अब अगर हम एक कॉइन की बात करते हैं, so if one coin is tossed, तो दो आउटकम्स आते हैं, राइट, हेड्स एंड टेल्स. तो वैसे ही अगर हम 10 कॉइन्स टॉस करेंगे, so for every coin we are going to get two outcomes, right, two possible outcomes. So 10 coins के लिए it would be 2 into 2 into 2, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 times, right. So therefore हमारा जो total number of events या total number of outcomes है, that is n of s, is nothing but 2 raised to 10, and 2 raised to 10 की वैल्यू होती है 1024. इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. The probability of getting less than 3 in a single throw of a die is. So when a die is thrown, जो sample space आता है वो है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 and 6. और जो इवेंट दिया है, सपोज इवेंट ए हम नाम देते हैं, वो दिया है द आउटकम शुड बी लेस देन 3. ओके, तो द नंबर विच यू सी ऑन द डाई मस्ट बी लेस देन 3. तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, लेस देन 3 में दो ही आउटकम्स है, 1 and 2. सो देयरफॉर n of a is equal to 2. Therefore probability of event A will be 2 out of, अब अगर सैम्पल स्पेस देखें, so n of s यहाँ पे मिल जाता है 6. So P of A will be 2 by 6 which is equal to 1 by 3, and इसका आंसर है ऑप्शन A. The probability of getting a spade from a well shuffled deck of 52 cards is. अब हमें एक सिंगल कार्ड ड्रॉ करना है यहाँ पर. सो जो सैम्पल स्पेस है दैट इज 52, और हमें जो कार्ड चाहिए वो है स्पेड कार्ड, ये वाला स्पेड कार्ड. अब स्पेड कार्ड्स होते हैं 13. ओके, तो सपोज ये हम इवेंट ए डिफाइन कर देते हैं ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड. सो n of a is equal to 13. So therefore probability of event A would be 13 by 52 which is equal to 1 by 4. और अगर ऑप्शन देखें then the answer is option B. Which of the following can be the probability of an event? अब ये अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, इसमें से फाइंड करना है कौन सी वैल्यू एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है. Now we know that if you have an event A, then probability of event A, इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 1 तक. तो ऑप्शन ए अगर हम देखें यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो नहीं आएगा. अगर हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन बी ये भी पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन सी अगर हम देखें, 18 डिवाइड बाय 23 अगर हम करते हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 23 आता है 0.78. तो ये इस रेंज में आता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. अब ऑप्शन डी में भी वही इशू है, अगर हम 10 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 आती है, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता. इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 by 23. Question is, if P of A is equal to small p and probability of B is equal to small q, then which of the relations is true? Now we know that probability of A given B
इसे हम कैलकुलेट करते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B upon probability of B. Now let us focus on probability of A intersection B. देखिए, now probability of A intersection B can be less than or equal to probability of A. देखिए, यहाँ पे दो केसेस हो जाते हैं. सपोज ये है A, ये है आपका इवेंट B और ये है A इंटरसेक्शन B. सो इन दिस केस A इंटरसेक्शन B जो है, that is P of A intersection B will be less than P of A. And second case ये हो सकता है, this is event A और ये है event B. So in this case, P of A intersection B is equal to P of A. So that is why ये दोनों को अगर हम combine करते हैं, we get P of A intersection B is less than or equal to P of A. So proceeding with this, probability of A intersection B is less than or equal to probability of A. P of A इसकी वैल्यू दी हुई है small p. So P of A intersection B is less than or equal to P. और हमें वैल्यू चाहिए probability of A intersection B divided by probability of B. So we divide both sides by probability of B. So P of A intersection B divided by probability of B. इस तरफ भी आएगा P divided by probability of B. लेकिन probability of B हमें दिया हुआ है Q. So therefore we could say P of A intersection B upon probability of B is less than equal to P by Q. But P of A intersection B upon P of B is nothing but probability of A given B. So finally we have probability of A given B is less than or equal to P by Q. तो ऑप्शंस अगर हम वेरीफाई करते हैं, इसका सही आंसर आता है ऑप्शन A. The question is, if probability of A is 6 is to 9 or 6 by 9, then the odds against the event is. So we have been given probability of event A as 6 by 9. Now we know that by definition probability is given by, it is a ratio of the number of favorable outcomes, the number of favorable outcomes upon the total number of outcomes. So this 9 represents the total number of outcomes. So this is the total number of outcomes. Now we have to obtain the odds against ratio. Now the odds against ratio, or rather in any odds against ratio, the first term represents the against outcomes. The outcomes which are not in favor, that is the outcomes which are against. And the second part, okay, represents the outcomes which are in favor. So looking at the given probability, we observe the number of outcomes which are in favor is 6. So we write down 6 over here, and 6 are in favor out of 9. So 3 would be against, right? So 9 minus 6, the difference is 3. So outcomes which would be against will be 3. So this is the odds against ratio. 3 is to 6. And the answer is option C.
क्वेश्चन दिया है फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B, probability of A is 2/5, probability of B is 1/4, then probability of A union B is. Now we know that by addition theorem, probability of A union B इसे हम obtain कर सकते हैं as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. तो ये आपको याद रखना होगा. For independent events, P of A intersection B is P of A into P of B. तो यही थिंग यहाँ पर हम यूज करेंगे. तो ये आ जाएगा P of A plus P of B minus P of A into P of B. अब A और B की probabilities हमें दी हुई है as 2/5 and 1/4. तो ये आ जाएगा 2/5 plus 1/4 minus 2/5 into 1/4. ये इक्वलाइज कर देते हैं हम. 4 2s are 8 plus 5 1s are 5 upon 20 minus 2 1s are is 2 and 5 4s are ये आ जाता है 20. So this becomes 13 minus 2 upon 20. So finally we have 11 upon 20. ऑप्शन एक बार देखते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11/20. क्वेश्चन है फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B, probability of A is equal to 1/5 and probability of A union B is 3/4. Then probability of B is. तो यहाँ पर हमें probability of A, this is given as 1/5. Then we have probability of A union B, इसकी वैल्यू है 3/4 और हमें ढूंढनी है probability of B की वैल्यू. तो suppose probability of B, let probability of B be equal to x. एक और important condition यहाँ दिया हुआ है कि A and B independent events है. Okay, तो independent events के लिए we know that probability of A intersection B होता है P of A, that is probability of A into probability of B, right? Because A and B are independent events, so probability of A intersection B is P of A into P of B. P of A ये है 1/5 and P of B ये हमने अज्यूम किया है x. तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आती है x/5. और अब हम यूज कर सकते हैं एडिशन थ्योरम for probability, that is P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर. A union B की प्रोबेबिलिटी है 3/4, A की प्रोबेबिलिटी है 1/5, B की प्रोबेबिलिटी है x एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिल जाएगी x/5. प्रोसीडिंग फर्दर, ये 1/5 लेफ्ट में हम ट्रांसफर कर देते हैं. सो 3/4 minus 1/5 ये इक्वलाइज कर देते हैं. सो वी हैव 5x
माइनस एक्स अपॉन 5। ये भी इक्वलाइज करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, डिनोमिनेटर में 20, यहाँ पे आ जाएगा 4x अपॉन 5। अब इसे कंप्लीट कर देते हैं। सो वी हैव 4x अपॉन 5 is equal to 11 upon 20. Let us cross multiply. तो 11 by 20 into ये हो जाएगा 5 by 4। 5 1 जा 5 4 जा is 20. तो x is 11 upon 16. So therefore हम कह सकते हैं probability of B is 11 upon 16। ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी। Question is, if P of A intersection B, that is probability of A intersection B is 0.60, probability of A union B is 0.70 for two events A and B, then the value for probability of A plus probability of B is. Now we know that by addition theorem of probability, so we just write down the addition theorem because all these terms are related to the addition theorem, and the theorem is, or the statement for this theorem is, P of A union B, that is probability of A union B, is P of A plus P of B, that is probability of B, minus probability of A intersection B. Now out of these four values, we have the value for A union B and A intersection B, and we have to obtain P of A plus P of B. So keeping these two terms over here, we transfer this on the left hand side. So we get P of A plus P of B could be written as, transferring this over here on this side, so we get P of A union B plus probability of A intersection B. Now the value for P of A union B is 0.70 and probability of A intersection B is 0.60. So if we add the two values, the total turns out to be 1.30, which is option A. A and B are two events such that probability of A is half, probability of B is 1 by 4, and probability of A intersection B is 1 by 5. Find the probability of A union B. Now in order to find A union B, we use the addition theorem for probability. That is, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now we have been given all these probabilities on the right hand side, so we have to just substitute these values. So probability of A is half, probability of B is 1 by 4, and probability for A intersection B is 1 by 5. Now we could equalize all these denominators 2, 4 and 5, and we can bring it to a common denominator 20. So we can convert all these three denominators into 20. So 2 times 10 is 20. So numerator also gets multiplied by 10. So this becomes 10 upon 20. 4 times 5 is 20, and in the numerator 1 into 5, that becomes 5. So this becomes 5 by 20 minus 5 fours is 20. So numerator also gets multiplied by 4, and we get 4 upon 20. So now we could combine these. So we have 10
plus 5 minus 4, and the common denominator is 20. So we have 15 minus 4. So that is 11 upon 20, which is option B. And the question is, if probability of A is half, that is P of A is half or 1 by 2, probability of B. So probability of event B is 3 by 5, and events A and B are independent. So they have mentioned A and B are independent events. So this is the condition given. A and B are independent events. Then what is the value for probability of A intersection B? Now we know that for independent events, P of A intersection B, that is probability of A intersection B, is simply calculated as probability of A into probability of B. Now we have both these values, so we simply substitute over here. So we have 1 upon 2 into 3 upon 5. So if we take this product, 3 times 1 is 3 and 2 5s gives 10. So the answer for this question is option B, 3 by 10. The question is A, B, C are three mutually independent events with probabilities 0.3, 0.2 and 0.4 respectively. What is the probability of A intersection B intersection C? So we have been given probability of A as 0.3, probability of B is 0.2 and probability of C is 0.4. Now it has been mentioned that the three events are independent. So therefore, by using multiplication theorem, we could easily obtain probability of A intersection B intersection C, and that is calculated as P of A into P of B, that is probability of B into probability of C. So we have applied the multiplication theorem for independent events. Now we have the three values, so we just plug in these values. So we get 0.3 into 0.2 into 0.4. Now if we perform the multiplication, we obtain the value as 0.024. So the required probability is 0.024 and the correct answer is option C.